Hello student, today we start with the new chapter coordinate geometry. In class 9th you have learned about the coordinate geometry. Now in coordinate geometry we denote the position of a point by an ordered pair. So in coordinate geometry there are two systems to denote the position of a point. Now first is polar coordinate system. In this system, the position of a point denoted by an ordered pair by r and theta. R is a distance and theta is an angle. तो ये जो पार्ट है ये अभी हमारे डिस्कशन का नहीं है, ये जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मिलेगा। हम लोग जो अभी बात करेंगे वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हम पॉइंट को एक ऑर्डर्ड पेयर x, y से डिनोट करते हैं। दीज आर द टू सिंपल नंबर्स, रियल नंबर्स, अभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये सिस्टम है क्या, इसको हमने क्लास 9th में डिस्कस किया है। इस सिस्टम में हमने जो हमारा प्लेन है, सरफेस है, इसको हमने two perpendicular lines, one is horizontal which is known as x-axis and another is vertical line that is y-axis, the point where they intersect at origin. Now the coordinate of origin is 0 0 because all the measurements start from this origin. Okay, now what is the meaning of these two numbers, these two values x and y? Suppose P have a coordinate x comma y. The coordinates of point P are x comma y. It locates in any quadrant. ये देखिए ये quadrant हो जाएंगे. When we draw the two perpendicular lines, plane is divided into four parts. Each part is known as quadrant. ये first quadrant, ये second, ये third, ये fourth. इसका मेजरमेंट का तरीका ये है कि ऑन द राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस वी टेक पॉजिटिव वैल्यूज, यहाँ नेगेटिव वैल्यूज होंगे, पॉजिटिव वैल्यूज होंगे, डाउनवर्ड्स में नेगेटिव होंगे और एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज होंगे, एज वी हैव डन इन सेकेंड चैप्टर पेयर ऑफ थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ इक्वेशन. नाउ हियर पॉइंट पी, the value x and y are the coordinate. X is known as x coordinate, popularly known as x coordinate, and its name is abscissa. And y is known as y coordinate, and its name is ordinate. ये पॉपुलर नेम है, हम लोग जनरली एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर है, मैंने इनके ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। जो फर्स्ट वैल्यू है वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, सेकंड वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट होगा। अब यहाँ से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऑन द एक्सिस, इफ वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम P to x axis and P to y axis, we have these two perpendiculars. What is the meaning of this? This distance, suppose this is m and this is n. So PM is what? It is y. This distance is y, and PN is x. Means x coordinate is a perpendicular distance from y axis. X coordinate क्या होगा? Perpendicular distance from y axis. ये ध्यान रखना है। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. ओके, इफ एनी पॉइंट्स, either it will any point lies either in quadrant or on axis. एक्सिस पर भी हो सकते हैं. Suppose any point lies on axis, x axis, then its y coordinate will be 0. Any point lies on y axis, its x coordinate will be 0. So this is the Cartesian coordinate system which we have discussed in
दिस चैप्टर। ओके, ये सारा कुछ हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो ये अभी हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें एक डिस्टेंस फॉर्मूला है टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑन द प्लेन। फिर हम देखेंगे एक सेक्शन फॉर्मूला है, एक लाइन सेगमेंट को किसी पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, और साथ ही हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो ये बातें हम लोग अभी आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। Now we come to the find the relation or the formula distance between 2 points. Suppose in this coordinate system we take 2 points on a plane. Suppose we are taking 2 points P and Q on first coordinate. The coordinates of point P is x1 y1 and coordinate of Q is x2 y2. P is x1 y1 and Q are x2 y2 are the 2 points, and we have to find the distance between these 2 points P and Q. Okay, so we have to find PQ. Now to find this we draw the perpendicular from P to x-axis and Q to x-axis. We draw the perpendicular from P and Q to x-axis. Suppose this is M and this point is N, and we draw a perpendicular from P to QN. यहाँ से भी हमने एक perpendicular draw किया. Suppose this point is R. Okay. Now what are these distances? Coordinates of point P is x1 y1. So this distance, perpendicular distance from y-axis is x1 and this is x2. Okay, so OM is x1 and ON is x2. So what is MN? So MN becomes ON minus OM, means x2 minus x1. Is that clear? Now MN is here, MN is same as PR because these are the perpendiculars. So this becomes a rectangle. So MN is same as PR. Okay, so PR also x2 minus x1. Is that clear? Now from here PM is how much? PM is y coordinate, perpendicular distance from x-axis, and QN is y2. So here PM is y1 and QN is y2. Now what is RN? RN क्या होगा? RN is QN minus QR, and RN is same as PM. So PM is QN minus QR. So QR becomes PM कितना होगा? y1 equals to QN is y2 minus QR. So the value of QR will be, transposing this, we have y2 minus y1. That is y2 minus y1. Okay, we find the value of QR also. So now look at here in triangle PRQ. Angle R is 90 degree because PR is perpendicular to this. So what is the relation between the sides? By using Pythagoras theorem. What we have? PQ square. Square of hypotenuse is equal to sum of the squares of other two sides, means PR square plus QR square. This gives PR is how much? x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is the value of PQ square. So this gives PQ equals to under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So this is the formula of distance between the 2 points. What is that?
difference square of the difference of x coordinate plus the square of difference of y coordinate and its root. ओके, तो ये हम इसमें वैल्यू x1 y1 x2 y2 गिवन होंगे, हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है। ओरिजिन के लिए क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट p x, y फ्रॉम ओरिजिन, ये क्या होगा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, 0। तो अब यहाँ OP क्या होगा, OP इज अंडर रूट ऑफ x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square. This gives you under root of x square plus y square. माने ओरिजिन से यदि हमें डिस्टेंस निकालना है तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट P के, इनके स्क्वायर्स का सम लेके अंडर रूट लेंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। अब हम इस फॉर्मूले का यूज डिफरेंट सिचुएशंस में करेंगे, ट्रायंगल्स में करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स में करेंगे, या सिंपल पॉइंट्स की लोकेशन बताने के लिए करेंगे। ओके, नाउ वी कम टू द यूजेज ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। सो एक्सरसाइज 7.1, based on it, the first question is find the distance between the following pair of points. The points are -5, 7 and second point is -1, 3. So here let P is -5, 7 and Q is -1, 3. These are the 2 points. Point P is this, Q is this. So by distance formula, distance between 2 points is equal to under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So the distance between P and Q is under root of x2. This is x1 y1 and this is x2 y2. So -1 and minus of -5, its square plus 3 minus 7 whole square. If you simplify this, this gives minus of -5 plus 5 minus 1, 4 square plus 3 minus 7 minus 4 whole square. If you simplify this, it becomes 16 plus 16, which is under root of 32, or further you simplified it, so it is 16 into 2, square root of 16 is 4, so we have 4 into under root 2 units, because it's a length, so we write it is in terms of unit. So in this way we can find the distance between 2 points. अब जो further questions हैं उनमें भी हम distance formula का use करेंगे to find the distance of quadrilateral or sides of triangle. Okay. Now the next question of this exercise is question number 3. Determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -1 are collinear. यानी आपको ये बताना है कि ये collinear है या नहीं है। तो first we find the distances. So first let P is a point whose coordinate are 1, 5, Q is 2, 3 and R is -2, -1. So distance formula क्या है, under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is the distance formula. Now we find the distance between P and Q. So PQ will be under root of x2 minus x1, 2 minus 1 whole square plus y2 minus y1 means 3 minus 5 whole square. If you simplify this, this becomes 2 minus 1, 1 and its square is 1, and 3 minus 5 minus 2, its whole square is 4. So we have the value is under root 5 unit. Okay. Now we find QR. QR is under root of again x2 minus x1 minus 2 and minus 2 minus 2 minus 2 whole square plus minus 1 minus 3 whole square
So this becomes under root of minus 4 whole square, which is 16, plus minus 1 minus 3 minus 4 whole square, also 16. So its value becomes 4 under root 2 units. Okay. Now we find the distance between P and R. PR is under root of x2 minus x1 minus 2 minus 1 whole square plus y2 minus y1 minus 1 minus 5 whole square. This becomes under root of minus 2 minus 1 minus 3 whole square is 9 plus minus 1 minus 5 minus 6 whole square is 36. So this becomes under root of 45, which is equals to 9 5s are, so 3 root 5 units. Now look at here. If points are collinear points, what are the collinear points? Suppose ABC are collinear, then they lies on the same line. Collinear points lies on the same line. In that case, sum of any two distance equals to third one. This is the condition. But look at here. Here in this question, is there any sum of two lengths is equal to third one? No. So here, sum of any two sides, two distance or sides, distances not equal to थर्ड डिस्टेंस, लेंथ भी बोलते हैं इनको हम लेंथ भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं. सो देयरफॉर पॉइंट्स P, Q and R are not collinear. and इस कंडीशन में ये कोलिनियर नहीं होंगे. सम ऑफ एनी टू साइड्स is equal to third side, then points are collinear. If sum of two sides is not equal to third side, then they are not collinear, means they form a triangle. Three non-collinear points form a triangle. Okay. Now we come to the next question of exercise 7.1. 7th question. Find the points on x-axis which is equidistant from point 2, minus 5 and minus 2, 9. So here we have two points. Suppose this is point P, which is 2, minus 5, and suppose there is a point Q whose coordinate are minus 2, 9. So these 2 points are equidistant from a point on x-axis. So suppose this is a point R. So point on x-axis will be x, 0. Its x coordinate will be 0. And what is given? Their distances from these points are equal. And ये distance equal है. So let point R on x-axis. So its coordinate will be x, 0. What is given? Given that PR equals to RQ. ये जो पॉइंट्स है ये R से इक्विडिस्टेंट है. तो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या आ जाएगा? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला PR is what? PR is x2 minus x1 means x minus 2 whole square plus y2 minus y1, that is 0 minus of minus 5 whole square equals to RQ, distance between these 2 points. So under root of x minus of minus 2 whole square plus 0 minus 9 whole square. Now simplifying this, what we have? We have under root on both the sides. So taking square root of both the sides, this is square root sign cancelled, taking square of both the sides. So we have x minus 2 whole square plus 0 minus of minus 5 plus 5 whole square equals to, this becomes x minus of minus 2 whole square. So it becomes x plus 2 whole square plus
0 minus 9 whole square becomes 9 minus 9 whole square. Now expand this. This is in the form of a minus b whole square. So a square minus 2ab plus b square plus 25 5 square is x plus 2 whole square will be x square plus 4x plus 4 and plus minus 9 whole square is 81. Now some values are similar in both the sides, so they will cancel. Minus x square will cancel, plus 4 will cancel. So transposing these values to left hand side, we have minus 4x and plus 4x comes to left side, it becomes minus 4x equals to 81 minus 25. So this becomes minus 8x is of 56. 81 minus 25 is 56. So here transposing minus 8, so it becomes 56 upon minus 8, that is minus 7. So coordinate of point R is minus 7 comma 0. So this point will be equidistant from these two given points. Okay. Now we come to the question number 6 of this exercise. Name the type of quadrilateral formed by the following points: minus 3 comma 5, 3 comma 1, 0 comma 3 and minus 1 comma minus 4. आपको ये बताने के लिए कि ये क्वाड्रिलेटरल है या किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल आइडेंटिफाई करने के लिए वी फाइंड द ऑल साइड्स, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स एंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स आल्सो. माने हमें क्वाड्रिलेटरल की साइड्स फाइंड करनी है और डायगोनल फाइंड करना है, तभी हम बता पाएंगे कि वो किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है. नाउ लुक एट हियर, इफ वी अज्यूम दैट दीज पॉइंट्स आर द vertices of any quadrilateral ABCD. Suppose ABCD is a quadrilateral. हमने ये assume कर लिया कि ABCD ये quadrilateral के vertices हैं. Point A is minus 3 comma 5, B is 3 comma 1, C is 0 comma 3 and D is minus 1 comma minus 4. We find the length of sides as well as the diagonal. So here by distance formula, distance is what? Under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So here in quadrilateral ABCD is a quadrilateral. What is AB? AB will be under root of x2 minus x1, 3 minus of minus 3 whole square plus 1 minus 5, y2 minus y1. Simplifying this, it becomes under root of 3 minus of minus 3 plus 3, 3 plus 3, 6, whole square is 36 plus 1 minus 5 minus 4 whole square is 16. So this becomes under root of 52. और इसको यदि हम सॉल्व कर लें तो ये इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 13 into 4 and square root of 4 is 2, so it will be 2 into under root 13 unit. Okay, now we get BC is under root of 0 x2 minus x1, 0 minus 3 whole square plus 3 minus 1 whole square is under root of 0 minus 3 whole square minus 3 square, that is 9. 3 minus 1 2 whole square is 4. So we have under root 13 unit. Now CD is under root of x2 minus x1 minus 1 minus 0 whole square plus minus 4 minus 3 whole square. This is under root of minus 1 square 1 minus 3 minus 4 minus 3 minus 7 whole square becomes 49 and this becomes under root of 50. If we simplify this, 25 2s are 50,
So 5 will comes out this square root sign, 5 under root 2 unit. Now AD or DA will be under root of x2 minus x1 minus 3 of minus 1 whole square plus 5 minus of minus 4 whole square. Simplifying this, what we have? Minus of minus 1 plus 1 होगा 3 minus 3 plus 1 minus 2 whole square is 4. Minus of minus 4 plus 4 5 plus 4 9, its whole square is 81. This becomes under root of 85 unit. Okay, so we find the length of sides and diagonals. Diagonals क्या होंगे? AC is the diagonal. What diagonal is AC? So what is AC? Under root of x2 minus x1 0 minus of minus 3 whole square plus y2 minus y1 3 minus 5 whole square. This becomes under root of minus of minus 3 plus 3 whole square is 9. 3 minus 5 minus 2 whole square is plus 4, that is under root of 13 unit. And BD is under root of x2 minus x1 minus 1 minus 3 whole square plus y2 minus y1 minus 4 minus 1 whole square. This is under root of minus 4 whole square, that is 16, and minus 4 minus 1 minus 5 whole square is 25, that is under root of 41 unit. Now look at the sides of the quadrilateral. यहाँ पर जो साइड्स आपको देख रहे हैं 2 under root 13, under root 13, 5 under root 2 into and 80 under root of 85, ये साइड्स इक्वल नहीं है. माने अब ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस ये नहीं है. ऐसा लग रहा है कि ये सिंपली इट्स अ क्वाड्रिलेटरल. नो स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल इज देयर. बट इफ यू लुक एट द AC is what? The diagonal. Here in these two length, यदि हम AC को देखें और BC को देखें, AC, BC and AB, AC, AB and BC. तो यहां क्या मिल रहा है आपको? यहां पर देखिए सिंस AB is equal to, AB कितना है 2 under root 13 and BC plus AC. Here AB means ये साइड जो है ये किसके इक्वल है? Sum of these two sides means it is a condition for collinearity. यहाँ पर ये जो पॉइंट्स होंगे ये कैसे होंगे? ABC कैसे होंगे? This implies that points A, B and C are collinear. ये जो पॉइंट्स है A, B, C ये एक ही लाइन में हो जाएंगे. जब ये एक ही लाइन में होंगे तो ये collinear हो जाएंगे. तो ये so this implies that the points does not form a quadrilateral. ये quadrilateral को फॉर्म नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि ये 3 पॉइंट्स जो है वो कैसे हो गए? कोलिनियर हो गए. ओके, सो दिस इज द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी. बट यहाँ पर हम साथ में मान लीजिए ये जो हमने साइड्स निकाले और डायगोनल्स निकाले हैं इनमें कुछ आपको रिलेशन मिल रहा है तो आप कैसे लिखेंगे? मान लीजिए यहाँ पर तो ये कोलिनियरिटी हो गई तो क्वाड्रिलेटरल नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपको कुछ ऐसे मिल रहे हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल. जो हमने क्वाड्रिलेटरल्स में स्पेसिफिक कंडीशंस पढ़ी हुई हैं, जैसे स्क्वायर. स्क्वायर में क्या है? स्क्वायर में क्या होगा? ऑल साइड्स आर इक्वल. ऑल साइड्स इक्वल होंगे और डायगोनल्स कैसे होंगे? इक्वल. d1 इक्वल्स टू d2, माने ये डायगोनल है d1 d2, ये इक्वल होगा तो ये स्क्वायर होगा. बट रोम्बस में
रोम्बस में भी क्या होगा, ऑल साइड्स इक्वल होंगे बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, d1 d2, so d1 is not equal to d2, ऑल साइड्स दोनों में इक्वल। रेक्टेंगल में क्या होगा, इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और जो डायगोनल्स हैं बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल, मींस यहां पर जो डायगोनल है d1 and d2, so d1 equals to d2 and opposite sides are equal, pair of opposite sides are equal, ये ध्यान रखना है। और पैरेललोग्राम में क्या होगा, इन पैरेललोग्राम pair of opposite sides equal but diagonals are not equal, d1 is not equal to d2। तो ये साइड्स और डायगोनल्स के थ्रू ही हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसका टाइप क्या है। ओके, तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, जस्ट हमने रिकॉल किया है इसको, और ये ध्यान रखना है कि क्वाड्रिलेटरल के लिए ऑल साइड्स और डायगोनल्स हमको निकालना है, तभी हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे।